सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मैं इधर कोई प्राइमर यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं अपना ये लुक बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ और लाइट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाऊंगी। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। इधर मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ इन शेड बेस 2। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना पूरा फेस सेट कर लूँगी। Now I'm filling my eyebrows. अब मैं अपनी आईज़ की क्रीज को डिफाइन करने के लिए कॉन्टूर पैलेट में से सबसे डार्क ब्राउन शेड लूँगी और उसे अप्लाई करूँगी। लाइनर भी मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। मैं इसे ज़्यादा थिक या बोल्ड नहीं करूँगी। और अब बारी है ब्लश ऑन की। मैं लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अपनी लिप्स को थोड़ा सा कॉन्टूर करती हूँ। अच्छा जी, लिपस्टिक भी मैं लाइटली टैप टैप करके अप्लाई करूँगी ताकि लाइट ही कलर आए, डार्क ना आए। अच्छा जी, मैं सेम डार्क ब्राउन शेड लेकर अपनी आईज के नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी आंखें सोई सोई ना लगें, क्योंकि मैं कोई काजल वगैरह नहीं यूज़ करने वाली। अच्छा जी, ये एक आई शेडो पैलेट है जिसके अंदर एक पर्ल गोल्ड शेड था जो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं उसे ही एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और एंड में बस मस्कारा अप्लाई करके मैं अपने इस लुक को फाइनल करूँगी। And here is the final look. You can see the glow. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में अपनी सजेशन देना मत भूलिएगा। थैंक यू।